I mean, what I really loved was your interview with Hassan with Something Hot, where you mentioned that, I think that what's interesting is like I love conflict in Mhm. dramas. I think it Yeah. propels a character's journey and their personal arc forward. Mhm. But I also feel like with that conflict, there should be, perhaps like you mentioned, something more three-dimensional Yeah. this time around Yeah. with more shades of gray. Um, Good. so otherwise, matlab, if there is material and if there are places for our characters to go, I would love to come back, man. You know, we had such a great time during the shoot. Amazing. It was Yeah. बट ये है कि फिलहाल तो हादी और मिशी के कैरेक्टर्स में काफी गुंजाइश है to go places, and I think even yeah. Gul, give Gul a real backstory, like a real one, then she can also go places. And even with, I don't know how you feel about you and Minu, because you can actually now in season 2 maybe असल romance का आगाज भी हो सकता है एक तरह से, because Yeah, अभी yeah, of मौका course. ही दोनों को रोमांस करने का. I mean, I think that as far as your and Miskeen's characters are concerned, remember we used to have these conversations जब भी episode on air होता था कि, for me, I loved the glimpses of, the actual real chemistry between the two characters, where you finally understood why Gul is with Miskeen and why Miskeen is with Gul. And those flashes were present in season one. And I feel like personally for you two, your characters, I think you have a lot of places you can go to because, अभी तो वो कहते हैं ना show don't tell. अभी तो सिर्फ बताया गया ना. We've just told that there is a certain friction between your in-laws, right? Which has turned you a bit cold and a bit bitter and has taken you to that extreme of possessiveness Yeah. that you have for your family now. So I think that that's something that can really be explored in season two. That dynamic, how when Gul goes back and now she's pregnant and now she has a child. I mean, I think मतलब बस वो है कि as long as it doesn't revert back to the same old लड़ाई झगड़े and conflict for the sake of conflict basically. Yeah. So I think कि क्या कहते हैं मजा आएगा हाँ, because team तो बहुत मजेदार है. टीम Like बहुत. I find myself missing everybody from even Mirchi and Adi and बदबू. uh, या वलीद मतलब कितने मजेदार खूबसूरत कैरेक्टर्स थे और मतलब कितनी अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया गया है सारे किरदारों को so it was really something special, like it's very rare to see a whole cast gel the way we did. में जो इंडिया से हमारे प्यार करने वाले फ्रेंड्स और फैंस आए हुए हैं, इट्स बिन सो, इट्स जस्ट बिन सो स्वीट टू सी के जो कहानी है, स्टोरी टेलिंग ट्रांसेंड्स ऑल द अदर नॉनसेंस. इतने लोग इंडिया से हम बिल्कुल कर रहे हैं और बांग्लादेश से भी, एंड इट्स सो फील्स सो वंडरफुल टू हियर फ्रॉम देम. बिल्कुल डेफिनेटली एंड आई थिंक आई एम सो हैप्पी एंड सो हम्बल कि हमारा जो एक प्ले था, हमारी इंटेंशन क्या थी इस प्ले के साथ. हमारी इंटेंशन थी टू एड लिटिल बिट ऑफ ह्यूमर, a little bit of light, a little bit of laughter into people's lives generally, right? I mean, ये ड्रामा कोई बहुत ही heavily intellectualize किया हुआ ड्रामा तो नहीं था ना जिसमें बहुत मतलब उसके बावजूद despite being such a mainstream comedy, I think इसमें moral messages थे, especially मतलब specifically like fast को लेकर के how not to be what not to do when you've just gotten married, और भी किरदारों में काफी इंटरेस्टिंग किस्म के आर्क्स थे. मतलब फॉर एग्जांपल बेबे मुझे एक फियर्सली काइंड ऑफ ऑलमोस्ट फेमिनिस्ट कैरेक्टर लगती थी आउट ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द प्ले, जो अस्मा बास ने इतना अच्छा पोर्ट्रे किया था कि अपने बच्चों की खुशी के लिए लड़ी हैं वो हमेशा. तो मतलब मैसेजेस तो फिर भी थे बट उसके बाद मतलब सो आई एम सो हैप्पी के आर्ट तो मैं हमेशा कहता हूँ. हमारा इंटरव्यू भी जब हुआ था आपस में, योर ब्रिलियंटली कंडक्टेड इंटरव्यू, उसमें भी हमने यही बात की थी कि आर्ट तो बॉर्डर्स बाउंड्रीज ये सब ट्रांसेंड करता है. एंड मतलब मेरे लिए जो बहुत खुशी और फख्र की बात यह है कि इंडिया में आई मीन देव बीन गोइंग थ्रू सच अ हॉरिबल टाइम with the COVID, matlab the way that it has hit and attacked the country and its people. और ये तो मैं जानता हूँ कि पॉलिटिक्स से साइड वहां पर मोहब्बत करने वाले लोग तो बहुत ज्यादा हैं. जिस तरह हम उनके काम को सराहते हैं, उनके काम को अप्रिशिएट करते हैं, उस तरह वो भी हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं एज पीपल, इफ यू टेक पॉलिटिक्स असाइड. ह्यूमन कनेक्शन, सो ह्यूमन कनेक्शन बिल्कुल
रोक सकते। इधर भी जब लोग बिल्कुल कमेंट करते हैं और मेरी इनबॉक्स में मुझे इतने मैसेजेस आते हैं, मैं आपको क्या बताऊं कि आप यंग यंग लोग जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, जो कॉलेज जाते हैं लोग, कि आप रोल मॉडल हैं। और मैं आई ऑलवेज ट्राई एंड रिस्पॉन्ड बाय द वे, अगर कोई तमीज से कोई स्वीट सा मैसेज दिखे मैं हमेशा जवाब जी देती जी जी हूँ। आई होप कि, बिल्कुल सेम है। है ना, देना भी चाहिए। सेम है या बिल्कुल। और सो बहुत एक बहुत स्पेशल चीज है। एंड आई जस्ट वेरी ग्रेटफुल फॉर द लव, एंड आई वेरी ग्रेटफुल दैट सियासत अपनी जगह, हम लोग साइड पे अपनी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, जिस तरह अभी हमारी बात बिल्कुल हमारे इंडियन बिल्कुल। आए में है। तो ओबी, टेल मी समथिंग, डोंट क्राई, दिस इज नॉट मेंट टू मेक यू क्राई, व्हाट आर यू डूइंग नेक्स्ट? Can you talk a little bit about it or not really right now? Currently तो I'm not doing anything. अपने काम पे जो खुद remember I've been speaking about it for ad nauseum for about a year and a half now कि I want to write my own stuff, तो उस पे थोड़ा focus कर रहा हूँ अभी. There's a lot of stuff on the personal front that's going on. My whole house is being renovated. I'm finally getting back on track. I've started yoga. I've started gymming again. So I'm Wow. मतलब थोड़ी अपनी थोड़ी फिजिकल हेल्थ और थोड़ी मेंटल हेल्थ को वापस ऑन ट्रैक ला रहा हूँ मैं अब. क्या कहते हैं, क्योंकि रमजान में तो आई थिंक रमजान मेरे लिए एक चुपके चुपके का ब्लर था. देयर वाज नथिंग. सारा दिन मतलब यही एंटिसिपेशन होती थी. मैं तो घंटों लगा देता था ट्विटर पे मैसेजेस पढ़ पढ़ के और डीएम्स पढ़ पढ़ के. और हमारी बिकॉज आई वाज व्हाट्सएप ग्रुप पे जो बातें होती थी, डायसेक्टिंग बिल्कुल 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 बिल्कुल. जोजमा जी बातें करती थी, जो हम सब बातें करते थे. वी वर ऑल सो इन्वेस्टेड. हम ऑलमोस्ट लाइक व्यूअर्स ऑब्सेस्ड थे विद चुपके चुपके. आई थिंक के अभी भी मैं उस फेज में हूँ जब मैंने रियलाइज ही नहीं किया है कि इस ड्रामे का इम्पैक्ट क्या हुआ है, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट वर्ल्ड वाइड. आई थिंक अभी भी वो एक नॉट डिनायल बट अभी भी वो एक लेवल ऑफ शॉक है कि मतलब the amount of love, the amount of outpouring of respect, and the anticipation with which so many people would wait for 9 p.m. or on YouTube के 10 बजे वो प्रीमियर होगा, हमने 10 बजे शार्प देखना है. और जो तबसरे होते थे इस ड्रामे पे, बड़े कम ड्रामों में मैंने देखा है. मैंने तो इतने सीरियस ड्रामे किए हैं जिन पे इतने तबसरे नहीं हुए. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. नहीं, और ये आई थिंक So it just feels very lucky कि but you work a lot more than I do in the television industry. तो मैं इतना आपसे कम काम करती हूँ, लेकिन अब मैंने 1 साल के बाद जब मैंने चुपके चुपके किया ये दिल मेरा के बाद, जिसमें मेरा बहुत छोटा रोल था, इतना बड़ा रोल नहीं था, और फिर जब मैंने चुपके चुपके किया एंड द एक्सप्लोजन, एंड देन रिमेम्बरिंग कि ओह दिस इज व्हाट इट फील्स लाइक, लोगों से मतलब इस तरह कम्युनिकेट करना और बस जाना, मतलब imaginatively kind of be in people's minds. It's a very very special feeling. it is, Yeah. and I think finally I'm coming to terms with and realizing, because वही मैं कह रहा हूँ ना, रमजान में तो हम अपनी धुन में मगन थे. Like, हाँ, the conversations we used to be having on the group, the हाँ. the एपिसोड देखना, मतलब मैंने इतनी शिद्दत के साथ और मतलब खुद नहीं वेट किया कभी अपने अपने किसी भी ड्रामे का, बिकॉज इट वाज ये बड़ी हाँ. अच्छी बात थी वैसे इस ड्रामे की. आई थिंक मतलब ये बना ही, ये जो रमजान सीरियल्स का मॉडल होता है कि हर दिन एक किसी भी माइनर मेजर क्लिफ हैंगर पे छोड़ के आपको आप जो एंटिसिपेशन बिल्ड करते हैं